Namaskar, good evening and welcome to the COVID Care Traveling Town Hall number 6 at Pithoragarh. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये ट्रैवलिंग टाउन हॉल है जो वर्चुअल है, फेसबुक पर है ऑफ कोर्स, बट हम एक एक शहर एक एक हफ्ते में कवर करने का प्रयास करते हैं। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे लोग पिथौरागढ़ से। We will have as many folks from Pithoragarh as possible, but of course from other locations. I'm told people may be joining from Nepal also. तो इंडिया से, अमेरिका से, कहीं दिल्ली से, कहीं से भी जुड़ेंगे, बट ज्यादा हम आपके प्रश्न लेंगे। सो प्लीज जो ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे इस समय सुनना शुरू करेंगे, लाइव जा रहा है, आप अपने कमेंट्स डालते रहिए कमेंट्स बॉक्स पे। वी विल ट्राई टेक योर कमेंट्स फ्रॉम देयर। राइट, अब मैं इनवाइट करता हूं अपने साथ स्टूडियो में मेरी कोलीग एंड आवर अदर पैनलिस्ट। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं कल्पना पांडे, जो कि हमारी कोलीग हैं एंड डायरेक्टर ऑफ सोशल प्रोग्राम्स एट इमेजिन इंडिया इंस्टीट्यूट। वेलकम कल्पना जी। Thank you. Then I welcome Dr. Ashok Pant. Dr. Ashok Pant is chairman of a group of schools in Pithoragarh as well as a scientific advisor to an environmental socio organization. Dr. Ashok Pant एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन हैं, जिनको आप जानते होंगे पिथौरागढ़ से जो लोग जुड़ रहे हैं काफी सारे, एंड साइंटिफिक एडवाइजर भी है। I now invite Dr. Preeti Mehrotra. ये बॉस्टन से जुड़ी हैं हमारे साथ, and she is an adult and child specialist, right? Infectious diseases. So Dr. Preeti Mehrotra, welcome to the studio with us, please. I also welcome with us now Dr. Sharon Vipula. Dr. Sharon भी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी है, न्यू हैम्पशायर से, and she's a specialist in pediatric infectious diseases, right? Yeah. Thank you. So Dr. Sharon का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम। फिर हमारे साथ जुड़े हैं Mr. Lalit Pant. Mr. Lalit Pant is the chairman of the Indian Red Cross at Pithoragarh as well as a collective of civil society organizations. तो श्री ललित स्वागत to the studio. Thank you sir for joining. फिर हमारे साथ जुड़ी हैं of course डॉक्टर रचना शेठ, and डॉक्टर रचना शेठ is from Houston, अमेरिका, और ये भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। So that said, we already see some comments and questions coming in. We have, अच्छा, इस प्रोग्राम में हमने लोगों से पूछा था तो बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जिन्होंने भी क्वेश्चंस भेजे हैं, तो स्कूल के बच्चों ने 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन क्वेश्चंस को हम सबको कवर करने का प्रयास करेंगे इस ड्यूरेशन में। मेरे साथी टेक केयर ऑफ दैट। काफी प्रश्न हमें ललित पंत जी के द्वारा, अशोक पंत जी के द्वारा और बाकी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आए हैं। As we start, I'm trying to see, okay, fine, some comments coming in. Nilima Khampa, good evening. Walia, good evening. Dr. Ashok, Prakash Chand, good, excellent guys. आप good evening, good morning तो अच्छा है, पर आप लोग प्रश्न डालिए ना, फायदा उठाएंगे इस conversation का focus. So we'll try and take advantage. Now may I invite Kalpana to please welcome our local host so that they can welcome. Kalpana ji, can you please? Okay. Good evening. First, welcome Dr. Rachna Seth, Dr. Sharon, and Dr. Preeti Malhotra, और यहाँ से Dr. Mr. Lalit Pant जी, जिनके बारे में आपको रॉबिन ने बताया, चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी से पिथौरागढ़, और बहुत सारा काम कर रहे हैं पिथौरागढ़ में और पिथौरागढ़ की बेहतरी के लिए। और डॉक्टर अशोक कुमार पंत जी, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, इनका स्कूल चलते हैं और पिथौरागढ़ के लिए इन्होंने काफ़ी, ये लोग मिल के ये चाह रहे हैं कि पिथौरागढ़ एक बहुत मेडिकली अवेयर और मेडिकली फ्री इक्विप्ड मिले, और आप लोगों का सहयोग और आज जो डॉक्टर्स आए हैं उनकी वजह से मे बी थिंग्स विल बी अ लिटिल बेटर। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड आई मस्ट वेलकम Robinder Sachdev, who is a well-known person. He's the one who's organizing it, everything, with the help of these lovely doctors. And Robinder Sachdev, कई लोग मुझसे पूछे Robinder Sachdev क्या करते हैं। Robinder Sachdev बहुत सारी चीजें करते हैं। He is an expert in international relations and he's a well-known figure in TV. कई बार तो एक बार में 5 या 6 channels में वो दे रहे होते हैं अपने expert comments. Plus, he runs a think tank company called Imagine India. So thank you, Robinder, and thank you everybody, and let's start.
Thank you so much, Kalpana. Thank you so much for such a gracious, this thing. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने gracious शब्दों के लिए, कल्पना जी, सब panelists के लिए. I think in order to make this whole session quick and more effective, what we'll do is that we have our doctors. We'll straight off jump dive into the questions, if that's okay with our doctor colleagues, right? Sure. थैंक यू. तो पहले कल्पना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, बट मीनवाइल एक लाइव में जुड़ी हैं, शी इज आस्क्ड दिस क्वेश्चन और ये हमारे पास ऑलरेडी भी आया है. Nilima is asking, during the pandemic we stay at home, but sometimes we want to go out and play. It's not possible to play alone, so how can we safely play outdoor games with our friends? Nilima, we'll come back to your question. We have this question, but meanwhile, Katna, from the question bank we have, could you please ask one question? And doctors, what we'll do is that we'll ask you a question, and we have the fortune of having three of you, but maybe one of you can take that question, right? Because we'll not go with the same question to all three, perhaps, right? So one or two of you can, and somebody can add, so that we are moving at a faster pace. Kalpana, please, the first question you would like to ask. I'll take a question, something similar to what Nilima has, Nilima R. Khampa has asked. So there are a few questions. I just take the name. They say for last, there's a question from Prakash Chand, Vedehi Bhatt and Devika Punetha. Last 1.5 years, children are just being imprisoned in their houses. We are facing pressure of online mode of teaching and exams. The psychologies of children has negatively changed. What should be the best process to deal with children when COVID gets over? There's similar to it. There is one more question. Is this pandemic affecting mental health? And there is one more similar question. During this pandemic, we stay at home, but sometimes we need to go, and that she's asked the same question Kajal had asked. So, yes, this is the question. Basically, see, the children are at home, they have nothing to do, and mentally and physically they feel they're imprisoned, and a lot of other issues. What do you suggest? Yeah, Sharon, please. Let's go to infectious disease. Yeah. Okay, so yeah, that's a very great question and something that has been of concern throughout the pandemic. So recently I heard one of my colleagues say that, yes, this virus has spared the children, but the pandemic has not spared the children. So thus far, there has not been any hard data looking at exactly the mental health implications in children and how this pandemic has affected them. However, in last summer, in the summer of 2020, there was an article in JAMA Pediatrics that looked at close to 2,000 children, school children in China when they were in a 1-month lockdown, and they found that there was about 21% reported cases of depression, and about 18% of the kids reported anxiety. So certainly, Dr. Sharon, may I request you, because we'll want to transmit this in Hindi also, if you can, do it in bites. Yeah. Okay, which I can quickly translate. Please, Hanji. Yeah, so just that, okay. And so certainly there are some mental health implications. Now, there are a couple of secondary epidemics that may come out of this, the COVID pandemic, and that is number one, loneliness, depression, anxiety. In the United States, we are already dealing with an epidemic with mental health in children. So certainly if your child has a pre-existing condition, which is a mental health issue, that is, certainly there's a risk of that being exacerbated. I also know in children... Dr. Sharon, please, if I may. Dr. Sharon कह रही है, yes, ये पूरा जो pandemic है, इससे mental health का definitely impact हो रहा है. कुछ studies हुई हैं चाइना में भी और अमेरिका में भी, जिसके चलते बच्चों को mental health का एक बहुत बड़ा concern दिख रहा है. अब इसको handle कैसे करें? How to handle these situation? I think that's the question. How do you handle it? Yes. So as more children become vaccinated, it's really important to try to get them back into some sense of normalcy. Excuse me. Let me say that as more adults get vaccinated, it becomes safer for children to start re-engaging in some of their normal activities. But okay, may I please? That's a very interesting point. डॉक्टर शेरन कह रही हैं कि इसमें देखिए होप केवल ज्यादा यही है कि जैसे जैसे ज्यादा एडल्ट्स को वैक्सीनेटेड होता जाएगा, वैसे पैंडेमिक का इफेक्ट कम होगा, तब बच्चों को भी बाहर ज्यादा निकलने की और खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट?
Yeah, the onus of and the responsibility of getting the children back into normalcy really falls on the vaccination of adults. So each Great adult. point, Dr. Sharon. May I? Great point. डॉक्टर शेरन कह रही है कि बच्चों के को कोविड से बचाने के लिए सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो है तो एडल्ट्स के ऊपर है कि एडल्ट्स अपने को वैक्सीनेट करा लें. मेरे ख्याल से बहुत 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 अहम मैसेज है. आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैसेज that for mitigating the impact of COVID on our children, the most important thing is getting the adults vaccinated as much as possible. Meanwhile, while you were talking, we had a comment come in from Kush. I think this is Dr. Khushbu Chokshi. Thank you so much, Dr. Khushbu. वो अपने ICU unit में अटलांटा से मैसेज कर रही हैं. Thank you so much, Kush. Yeah, please continue. Yeah. So as more adults get vaccinated, children can start playing outside. We know the chances of outdoor transmission is significantly less than indoor transmission. So engaging again in outdoor activities with small cohorts of kids. So just small groups of children, not really intermixing with all the kids in the neighborhood, but just sticking to a small group is beneficial. Sure. When a child can wear a mask, they can, that also protects them. But it's really important that parents find little pockets of ways where they can have some sense of normalcy for the children. Awesome. Thank you. May I, transmit? डॉक्टर शेरन का ये कहना है कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, नीलिमा खांपा कह रही है हम होमवर्क करते करते थक जाते हैं, वी गेट डिप्रेस्ड ऑफ होमवर्क एंड व्हाट टू डू. डॉक्टर शेरन का कहना है कि इसमें केवल यही अभी रास्ता है कि जैसे धीरे धीरे अनलॉक हो तो छोटे छोटे ग्रुप्स एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में आपस में मिले बच्चे, वो एक रास्ता होगा. आप खूब सारे लोग एक साथ नहीं मिल पाओगे अभी शुरू में, but छोटे ग्रुप्स में with proper mask and social distancing. Thank you so much, Dr. Sharon. May I come now to अब मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर श्री ललित पंत जी को. आपके कोई क्वेश्चन है सर? वन क्वेश्चन प्लीज जो आप शेयर करें with the panel of doctors, please. Tell him to unmute. Tell him to unmute himself. ललित जी अनम्यूट कीजिए अपने को और प्रश्न पूछिए. Lalit ji, you're on mute. Okay. Meanwhile, may I ask? हाँ, ललित जी अपना प्रश्न पूछिए. कोई एक अहम प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं या आपके पास आए हैं इस टॉपिक को लेकर के. जी, बहुत सारे बच्चों की ये धारणा है कि हम तो ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर जो स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं हैं उसका अभाव है. तो जो तीसरी लहर की चर्चा पूरे देश में और मीडिया में है, उसके अनुसार हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम तीसरी लहर से बच सकें, क्योंकि हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं और जो सीमित संसाधनों के बीच में हम किस तरीके से तीसरी लहर से बच सकते हैं. Awesome. The question with Mr. Lalit is Lalit Panji is asking is that many children think that we are living in a very remote area where the medical infrastructure is very insufficient in a way, and there is talk of the third wave coming. How can we prevent ourselves, protect ourselves from the third wave for the children? This is the question of the children, from the children. हाँ जी, डॉक्टर प्रीति आप लेंगी प्लीज. हाँ सर, हमारे ख्याल से 3 चीज़ों हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है थर्ड वेव प्रिवेंट करने के लिए. फर्स्ट, वैक्सीनेशंस. अडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है. और by adults getting vaccinated, we are going to be able to bring children back to some amount of normalcy, जैसे Dr. Sharon ने कहा. So vaccination is probably the most important thing to help prevent the third wave. May I please? See, देखिए डॉक्टर प्रीति मेहरोत्रा का भी वही कहना है जो भी कुछ समय पहले डॉक्टर शारन ने कहा था. डॉक्टर प्रीति कह रही हैं कि थर्ड वेव या किसी से बचने के लिए सबसे अहम चीज है कि एडल्ट्स की वैक्सीनेशन हो. जितने ज्यादा एडल्ट्स वैक्सीनेटेड होंगे उतना चांस कम है बच्चों में कोविड आने का. इज दैट द अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर प्रीति? हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू इफ एनीथिंग एल्स. दूसरा ये है कि आउटडोर्स में ट्रांसमिशन बहुत कम है. So we know that by being outdoors, the more outdoors that we are, there's less transmission there. Transmission is more likely to occur in smaller, crowded locations. So the way we decrease transmission and prevent
another wave or another cluster or outbreak is by spending time outdoors, and maybe you can do homework outdoors too. Oh, great. So, Dr. Preeti, what you're saying is that, if they can be outer and in distances is better, right? डॉक्टर प्रीति का कहना ये है कि बाहर अगर आप ज्यादा रहें, जो स्टडीज देखी गई हैं उसमें ये देखा गया कि बाहर अगर ओपन में लोग हैं तो ट्रांसमिशन के चांसेस कम है अगर खुले में आप हैं, निस्बत की अगर आप किसी क्लोज स्पेस में, जैसे कमरे में काफी लोग हैं, तो वहां ट्रांसमिशन का ऑब्वियसली चांस ज्यादा है। तो इनफैक्ट शायद आप अपना होमवर्क भी बाहर जाके बैठ के कहीं खुले मैदान में होमवर्क कीजिए। दैट्स अ ब्रिलियंट सजेशन, राइट? जी, और तीसरी ये है कि जब लोग अंदर है तो मास्किंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, और हाथ धोने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मास्किंग एंड हैंड हाइजीन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर्स फॉर प्रिवेंशन व्हेन इनसाइड। When inside, even with your own family? No, जब when with your own family, we know that is one unit. So जब मिलजुल होता है तब मास्किंग और हैंड हाइजीन हाथ धोने के लिए बहुत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Thank you so much. Dr. Preeti कह रही हैं, Dr. Lalit ji, before, Sharon, a moment. Let me put this and then I'll come to you because I cannot process much. कि मास्क पहनना और हाथ धोने का सैनिटेशन दूसरी चीज है। अपने घर के अंदर नहीं, बट अगर कहीं और हैं आप किसी क्लोज स्पेसेस में जहां पर और लोग भी आपके साथ हैं, तो मास्क और हाथों की हाइजीन 100% इम्पोर्टेंट है। Thank you. Yes, Dr. Sharon, please. Yeah, I completely agree with Dr. Preeti. Just a couple of things I wanted to add. I know that the Pfizer vaccine is anticipated to be administered in India at some point in the upcoming months. And that is one of the vaccines that is approved for children 12 years and over. So that's another way to protect our children. So once that vaccine is available in India, it's so important that all the kids that are eligible are vaccinated. So 12 years and above. Sure. So may I translate, please? डॉक्टर शेरन का कहना है कि भारत में भी तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, राइट? ये एडल्ट्स के लिए है। दुनिया में जो फाइजर कंपनी है उसने जो वैक्सीन बनाई है वो अमेरिका में भी चल रही है, वो बच्चों में भी वैलिड है 12 साल से ऊपर की उम्र के। तो अभी भारत में फाइजर की वैक्सीन आने वाली है। सो जब फाइजर की वैक्सीन अमेरिका भारत में भेजेगा तब उस वैक्सीन से बच्चों को भी वैक्सीनेट कराया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर शैरन। बिफोर वी मूव, लेट मी टेक क्विक। बागेश्वर महिपाल इज सेइंग, आप सभी विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर महिपाल वाज आवर सपोर्ट पार्टनर इन बागेश्वर लास्ट वीक टाउन हॉल। बहुत बहुत धन्यवाद बागेश्वर जी आपके कमेंट का। देन आई सी आई एम गेटिंग अ कमेंट फ्रॉम मिस्टर जलज मेहता। Jalaj is saying, is the COVID third wave, if it comes through, I pray it should not come, going to impact kids mentally and emotionally? Who could quickly take this question from our Mr. Jalaj Mehta? हाँ, ये तो सही बात है। I mean, it's true that we know with infection has come isolation, and isolation के साथ there has been loneliness and sadness. ये तो कोई शक नहीं है कि ये हो रहा है, और इसलिए हाँ, श्योर। डॉक्टर प्रीति कह रही हैं कि इसमें कोई शक नहीं, ये मेंटल प्रेशर आएगा, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, आइसोलेशन में होना है, और आइसोलेशन में होते हैं तो लोनलीनेस आती है, और लोनलीनेस आती है तो फिर मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सो मच। या प्लीज, यू वांट, या प्लीज। हाँ, लेकिन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि trying to find ways to support each other, trying to find support in our families and in our communities is what will help us through isolation. Thank you so much. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डॉक्टर प्रीति कह रही है कि सपोर्ट आपस में फैमिली में हमें रास्ता बनाना, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, उसको लेकर के प्रयास करा जा सकता है। Now before I move on, I just want to acknowledge, and then Kalpana, maybe you can take some question from our list. One sec. There's a question coming from Ashok Gosai. Hello, Dr. Ashok Kumar Gosai, DO Pithoragarh here. Thank you so much. Dr. Ashok Gosai was in fact very helpful for us to put this event together. They've outreach to बहुत सारे teachers और education institutions. ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। So thank you so much, Dr. Ashok, आपके सहयोग के लिए, और आपके थ्रू जो प्रश्न भी आए, हमारे पास बच्चों से प्रश्न आए, प्रिंसिपल से प्रश्न आए हैं, तो उन्हीं को हम प्रयास कर रहे हैं लेने का। Now may I invite my colleague Kalpana to pick up a question from the bank that we have, please. Okay. Already joined.
Before there's a question that people had asked for the third wave. So usme there are something similar to this. There are 3 children, Surinder Bohra, Sunita Rawat, Yogesh Bhatt had also asked the same question. So thank you for asking this question. And there is one very interesting question which Himanshu, Rohit Bora and Madan Kumar has asked. For children up to the age of 18, is there any medical substitute for vaccine? Because vaccination availability and the process is very confusing all the time. May I toss this question? Thank you. May I toss this question to Dr. Rachna Sheth? Yes. We've been having a little off and on, but yeah, Dr. Rachna, your thoughts, you caught the question, right? Yes. Yes. Hanji, please. So वैसे तो वैक्सीन के सिवा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने आप को सेफ रखें, और सेफ रखने के तरीके जो अब तक डिस्कस हुए हैं वो ठीक है, मगर आजकल हम इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं और एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपना मेंटल स्टेटस ठीक रख सकते हैं. आई थिंक दैट विल बी the best substitute is to make sure that we're taking care of our other health issues. So, make sure you keep doing exercise, make sure you keep talking to your friends, make sure that you're, eating good food, healthy food. And then Dr. Sheth, may I just understand? So what you're saying is that there is no substitute for the vaccine, medicine-wise. But some things can be done, like which you're listing right now. Mm-hmm. Right? Dr. Sheth? She's talking, उसने कहा एक्सरसाइज से भी बहुत फर्क पड़ेगा, ये भी बात बोली है ना, कि एक्सरसाइज करें और अपने दोस्तों से मिलजुल के रहें और कांटेक्ट में रहें, उससे बहुत उनका जो मेंटल स्टेटस उससे इफेक्ट होगा कि वो अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, अकेलापन ना हो. आई थिंक दैट इज व्हाट क्योंकि जब जो अब तक जो बातें की है, वो हमें दिखा रही है कि ये जो लोनलीनेस और आइसोलेशन है वो बहुत ही सब महसूस कर रहे हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट. Dr. Rachna's sound was a bit here, but she'll join back. May I now invite Dr. Ashok Pant? Sorry, I just wanted to say that there's a lot of misinformation out there about how ivermectin or hydroxychloroquine or even antibiotics can prevent COVID-19 or treat early COVID-19. And it's just so important to emphasize to parents that those things are not going to protect your children. And the only thing is the vaccine. One moment. Awesome. Dr. Sharon ये कह रही हैं कि बहुत misinformation भी है बाहर की हाइड्रोक्लोक्सीक्लोरिन और whatever कुछ अदर दवाइयाँ हैं जो हेल्प कर सकती हैं, but कोई दवाई नहीं है जो कि आपको मदद कर सकती है other than the vaccine. There's no medicine other than the vaccine, right? Awesome point. Thank you so much, Dr. Sharon. अब Dr. Ashok Pant, आपका कुछ प्रश्न, you also got many questions from your various schools. What would you like to ask or share, please? Yeah, very good evening. First of all, I would appreciate the efforts by the English India Institute, especially Robin Sachdeva and Kalpana ji. And I especially thank to Dr. Sharon, Dr. Preeti, Dr. Rachna and Dr. Samar for rendering their valuable suggestions, their consultation to the people of the Pithoragarh, just like remote area. I once again thank you. So far as these discussions are going on, I had a discussion with the many of the students in my school and colleagues. There is a general presumption that whether there is a news around that COVID, the third wave of COVID is coming. I just want to make it clarify that either coming of the third wave of the COVID-19 is a presumption, or it is scientifically proved or evidence-based. If it is evidence-based, then what would you suggest? What are the initial precautions, initial remedial measures before entering the third phase, we can take care of our children? So what are the initial precautions we must take? Second thing I would like, is there any vaccine being prepared for the children below 10 years of age or for the infants? That second thing. And third thing, very important, in the COVID-1 and COVID-2, I found personally, there was a havoc created
by जिसको पहाड़ हिंदी में कहते हैं दहशत फैल गई. The people were afraid of the COVID. So if the people had taken it very peacefully and precautionally, the things would not have been so worse. So what would you suggest for the parents to how to tackle the students to save them from the anxiety, loneliness, and other curiosities? So what would you suggest? So these three couple of questions out here. थैंक यू डॉक्टर पंत, आपने काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ दिए, बट या श्योर देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बट आई वुड इनवाइट ईच डॉक्टर वन बाय वन पिक अप वन ऑफ द, ही हैज थ्री, so quick three, if you may please, who would like to? I will start by saying I think the third wave अभी क्लियर नहीं है कि थर्ड वेव होगा कि नहीं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये एपिडेमियोलॉजी ये है, यानी we don't know whether there is no evidence. जी, इसलिए वैक्सीनेशन और वैक्सीन होने के लिए बहुत काफी इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि वैक्सीनेशन is the single most important thing that will help prevent a third wave. Thank you, Dr. Preeti. May I just quickly translate? So आंसर ये है कि थर्ड वेव का अभी कोई साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, राइट? इज एम आई करेक्ट टू से दैट डॉक्टर प्रीति? नो साइंटिफिक एविडेंस, किसी को पता नहीं है, हाँ, किसी को पता कुछ भी नहीं है, ये एस्टिमेट है, तो कुछ कहने को है कि थर्ड वेव होगा, पर पता नहीं है क्या आगे होगा, सो जो भी होगा आगे उसको थर्ड वेव कहला दिया जाएगा मे बी, राइट? Yeah, any other point you would like to make, Dr. Preeti, and then I'll move to quickly Dr. Rachna for her comment on one of the. यानी कि वैक्सीनेशन भी बहुत फायदेमंद चीज है. Great, thank you so much. Dr. Sharon or Dr. Rachna, if you got some part of yes, please, Dr. Sharon. Yeah, just quickly, I know that there's been a lot of media attention. The Indian media is talking a lot about the third wave, and I agree with Dr. Preeti, where there may be a third wave, but it does not have to be as severe as the second wave was. That's number one. Number two, in addition to one moment, please. डॉक्टर शेरन का कहना है यस, मीडिया में बहुत खबरें हैं कि थर्ड वेव आएगी, पर अभी हम ये कह नहीं सकते कि ये जो थर्ड वेव आएगी, ये जो पिछली वेव आई थी उससे ज्यादा ये डेंजरस होगी या कम होगी. हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो, जो डॉक्टर प्रीति भी कह रही थी. यस डॉक्टर शेरन. And if and when the third wave happens and how severe it will be really depends on the level of what we say herd immunity, which we've defined it as somewhere between like close to 70%. So again, if and how severe the third wave will depend on the vaccination rate in the Indian population, as well as the number of people who have natural immunity. So both of these combined could result in a less severe third wave. Thank you. One may I request जितने हमारे panelists to keep themselves on mute unless you're speaking. It helps reduce the echo, please. Thank you so much. Secondly, Dr. Sharon कह रही है कि थर्ड वेव का इंटेंसिटी क्या होगा उसको कह नहीं सकते, पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि थर्ड वेव का जो रंग रूप निकल के आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, वन, और कितने लोगों ने कोई अपनी नेचुरल या अदरवाइज उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है टुवर्ड्स कोविड. तो थर्ड वेव जो आएगी उसका भी कुछ कह नहीं सकते कैसी होगी, बट ये है कि अगर ज्यादा वैक्सीनेट हो गए जितने, तो उतने थोड़ा कम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वाला होगा. यस प्लीज. And instead of perpetuating the fear of a possible third wave, and especially, putting fear in the minds of parents with the supposed children being more affected with the third wave, what the media and the country needs to be focusing on more is learning the lessons from this very severe second wave. So instead of talking and anticipating the third wave, we need to be focusing on the hospital preparedness, the government's preparedness in terms of caring for hospitalized patients, and also what the plan is for vaccinating people in not just the urban areas, but also in the remote areas. So great point. And before I come to Dr. Rachna, Dr. Sharon का ये कहना है कि instead of हमें सोचना मीडिया में वो सारा की थर्ड वेव आ रही है, हमें बल्कि इस टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए.
Thank you so much, Dr. Shah. Yeah, Dr. Rachna, Sorry, lastly, I just wanted to say that there is Pfizer right now in the United States is looking at vaccination less than children, less than 12 years of age, and they're looking at different doses of the vaccine. So it's called the dose finding study. So that is being looked at. In the United States, we're expecting a vaccine for children less than 12 somewhere at the end of the summer or beginning of the fall. So eventually this will then reach India. थैंक यू सो मच डॉक्टर शरण का कहना, जहां तक रही बात बच्चों की वैक्सीन की, वो अभी अमेरिका में होप कर रहे हैं फाइजर के अलावा कि समर्स में, गर्मी में वो वैक्सीन आएगी. अगर वो वैक्सीन आ गई तो फिर धीरे धीरे वो जाके बाकी देशों में भी जाएगी. थैंक यू सो मच. मैं इनवाइट डॉक्टर रचना शेख फॉर योर थॉट्स ऑन द leading questions, please. Okay. So I'm going to touch on the last question. Okay, Dr. Sheth, can you come a bit closer to the audio? Your sound is a bit far. Yeah, thank you. I'm as close as I can be. Can you hear me? Yeah, slightly better. Yeah. Okay. So it's important, the question was that what can we do to prevent the anxiety and the loneliness? One thing, there are a couple of things that I always recommend. एक है कि टीवी जो रोज ऑलवेज जो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है वो टीवी बंद कर दीजिए. दिन में सिर्फ आधा घंटा या इंटरनेट से थोड़ा इंफॉर्मेशन ले और जो वो डेली अपडेट्स है बस उसका ख्याल रखें. रोज ये डरावनी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक हो रहा है, इसमें हम सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते. इसलिए और सारा दिन ये सब सुनने की जरूरत नहीं है और हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. So that's very important. That's a great point. हाँ जी, please next. Especially हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ हमारे पर डिपेंड करते हैं completely और वो कुछ नहीं कर पाते. अगर हम डरे हुए होते तो वो तो दुगना डर जाएंगे, right? So it's very important कि हम अपने आप को mentally थोड़ा stable रखें और that will help कि हमारे बच्चे भी हमारी जो शक्ति है वो देखेंगे, and they will also feel that they're empowered to do more to survive this pandemic. So I think that's very, very, very important to stay with the facts and not to listen to a lot of the media, because I listen to the Indian media and there are sirens, there are 8 screens going on, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस politician ने ये किया है, हम सब मर जाएंगे, वो मरेगा. Like that's not true. हमारी जो घर की बात है वो ही सही है. So it's important that we listen to the facts and not keep listening to the Indian media. So I think that's actually very important for health. Great point. Thank you so much. और हमें इसको कुछ ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है. ये तो एक्चुअली बड़ी कम्युनिकेशन स्टडीज में भी होता है कि टीवी जो दुनिया दिखाता है, दुनिया असलियत में उतनी खराब नहीं होती, क्योंकि टीवी को तो केवल नेगेटिव न्यूज से ही न्यूज बनती है ना. तो जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं उन्हें लगता है कि दुनिया में ज्यादा खतरा है, ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप रोज देखेंगे. तो इसलिए टीवी को कुछ शायद थोड़ा कम कीजिए. Kalpana ji, may I come to you for our question bank? If you can pick up some question from some of the students actually which were there. Some medical oriented question, not third wave general and all, but some specific, if those could be, which could you're on mute, man. There is this question from Deepti and Chaya. वो पूछते हैं, what is the COVID scene in US and what are the behavioral changes among the children in US? US में COVID scene कैसा है और वहाँ पे क्या लोगों के बिहेवियर में चेंज आया है, एक ये. और दूसरा एक और है, एक और क्वेश्चन पूछा है निहारिका वर्मा में, हमें जो वैक्सीन लग रही है हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल है, ये हमारी बॉडी को कब तक सेफ रखेगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सी बेटर है? सो दीज टू क्वेश्चंस टुगेदर. Please start. I actually don't know the difference between Covishield and Covaxin. Jyoti and Niharika, great questions. First question was about COVID scene in the US. So यहाँ पे thankfully COVID is decreasing very much, and that is in large part due to vaccination. So vaccination has really allowed the US to
progress in some fashion back to normalcy. Thank you. Yeah, sure. Thanks. Dr. Sharon, your thoughts on those? Or Dr. Preeti, you want to add something more? Please. I'm just. Okay, fair enough. You've conveyed. Yeah, Dr. Sharon. Yeah, so I didn't understand the full question because it was in Hindi, but I picked up that there is a Two question. parts. The question is one was, how is the COVID impacting kids in America? But fine. To which Dr. Preeti said that America has been vaccinated, so we are facing less curbs on all these things. But the other question was about the vaccine, right? The vaccine, if we take, the kid is saying, or a young teenager, we take the vaccine, for how long would it be valid, or would it protect us? या अभी किसी को पता नहीं है कि वैक्सीन के लिए इम्यूनिटी हाउ लॉन्ग दैट विल लास्ट, यानी 3 महीने या 6 महीने या 1 साल, अभी किसी को पता नहीं है इस मामले में. लेकिन कोवैक्सिन और कोविशील्ड, यानी both of them are nobody can quite say equally effective. The most important thing is that jo vaccine available hai, take that vaccine. Thank you so much, Dr. Preeti. Dr. Sharon, and then we'll come to Dr. Rachna. I think we've covered this question, right? Unless you have something new to add, Dr. Sharon. I mean, maybe another question. Great. Before we move on, there's a comment from Mr. Bankoti ji, Mr. B. Singh Bankoti, saying good evening to everyone. Good evening, Bankoti ji. He's saying, what is certainty of third wave and why do we assume this will affect the children only? Bankoti ji, ye question already, we've covered this discussion in the earlier part of our discussion. So later on, this whole thing will be on a YouTube recording. We would, of course, send and share this with you. But Dr. Sharon wants to say something. Yes, please. Yeah, so I just wanted to wrap up this discussion about the third wave affecting children. So we're, now as more adults get vaccinated, it is expected that we may see increased cases in children, but we should not be afraid of that necessarily, because we know that children have mild to or even asymptomatic disease. So that might be the natural progression of this pandemic, where as older people are vaccinated, then we see it in the younger age group, but a very small subset of pediatric patients get hospitalized or very ill. Thank you so much. Dr. Sharon का कहना ये है, बड़ा important point है कि जो देखा गया है, कोविड जो होता है उसके numbers बच्चों में actually उस दिन statistics, I think only you were telling that कम बच्चों को hospitalization की जरूरत पड़ती है. Majority बच्चों को अगर कुछ होता है वो घर में ही जुकाम, कफ जुकाम वगैरह 80%, और बहुत ही कम numbers को बच्चों को severe or serious problem होगी. Am I correct in transmitting that, Dr. Rachna and Dr. Preeti? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है. Yeah, Dr. Rachna, आप कुछ कहना चाह रही थी? You're on mute, ma'am. Dr. Rachna, you're on mute. नहीं, बस yeah. I just wanted to reiterate what they said, that there is going to be a third wave, is definitely because of the adults being vaccinated. And so we'll see more disease in children. It doesn't necessarily mean that there's going to be worse amount of disease or a higher number because of the third wave. It'll just be the next bump. And so that's... Sure. Thank you. Kalpana ji, from our question bank, कोई और next question लीजिए किसी बच्चों का, कोई medical वाला हो अगर, और other than third wave in general. Yes, there is one. Let me ask him. There is a question from a teenage girl. Will you be able to take it? Something relating to gynae. Will any of you be able to take this? She is Mahima Pant has asked a question. She says she's talking about leukorrhea. She says thus after 10 or 12 years, even even young girls and even elderly women, they face this problem of leukorrhea. And उसमें से क्या परेशानी क्यों होती है, इसका कोई इलाज है? Is there a treatment for this?
I think she's talking of the discharge. I think that you have it in this. Even she's a young girls and elderly women, and it's a बहुत परेशान. There are a lot of problem associated with it. Is there a treatment for it? If you could take that question. Question. So pellet leukorrhea is normal. डॉक्टर रचना आप थोड़ा लाउड बोलेंगी अगर it will be helpful. या मेरे को कम सुनाई दे रहा है. Maybe my ears I need to clean up. Sure, thanks. Can you hear me? Yeah. Okay. हाँ जी. So leukorrhea is. हाँ अब better है. Yes. Yeah, leukorrhea is normal, especially even in young women. The consistency of it changes over time. It's very normal. परेशानी सिर्फ हमें होती है देखने से. Actually उसमें कोई परेशानी नहीं है. ये बॉडी का natural reaction है. सब अंदर जो चीजें हैं वो निकालने के लिए. So I wouldn't worry about it unless if there's a foul smell or if it's painful or itchy. Thank you so much, Dr. Rachana. And while you're at it, there's another related question maybe we can take coming from Nirmal Chaudhary. He's saying, or he, breastfeeding mother को vaccine के effect क्या है? Vaccine लगानी चाहिए या नहीं? Should a mom, a young mother who's breastfeeding, should she take a vaccine or not? Yes or no? Quick. Yes. Here in the United States, we are encouraging breastfeeding mothers to take the vaccine. वैक्सीन लेने से जो वो माँ को एंटीबॉडीज जो अपना बदन बनाती है वो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चा में जाता है और बच्चा को भी प्रोटेक्शन देता है. इसलिए लैक्टेटिंग मदर को और प्रेग्नेंट वुमेन को लेने का बहुत फायदा है. Thank you so much, Dr. Rachna. मेरे ख्याल से आपका प्रश्न आंसर हो गया होगा. Meanwhile, in the panel, we also welcome with us, Adya Singh. She is executive director of India and Bharat together and has been a pillar of support for us in putting this program together. And also we welcome, I think she had joined Renu Thakurji, and we will come to them in a moment. Now, Kalpana ji, would you have another question? From the list that also Ashok Pant and Lalit Pant. Lalit Pant ji and Ashok Pant ji did so much of work और इतने इन्होंने प्रश्न इकट्ठे करे कि हम उसी बैंक को भी आधा भी नहीं कर पाए उन प्रश्नों को आंसर. और यहाँ हमारे फेसबुक लाइव में भी आ रहे हैं. तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो पहले आ गए और कुछ क्वेश्चन इस समय जो आ रहे हैं उन सबको मिला जुला करके आंसर ले पाए विद आवर एमिनेंट पैनल ऑफ डॉक्टर्स. Then a question I have to take, or okay, there's a question from Pallavi Pant of class 11. Is it possible to have flu and COVID-19 at the same time? Does having seasonal allergies increase my risk for COVID or makes my COVID more severe if I get COVID? This is from Pallavi Pant. Pallavi, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है. It's a great question. यानी कि किसी को पता नहीं है फ्लू और कोविड के बारे में whether both of those together will cause severe disease, because actually there's not a lot of testing that has occurred for both flu and COVID at the same time. So the most important thing is track your own symptoms. यानी कि fever के लिए paracetamol or बुखार और जुकाम के लिए monitor your own symptoms or your cough and your oxygen level, just as you would do for any other virus. Or seasonal allergies के बारे में, we do not think that seasonal allergies will make COVID disease more severe, but यानी कि if the testing is available for COVID and you are unsure of your symptoms, then you should get tested. Thank you so much, Dr. Preeti. Dr. Preeti का कहना है कि ये जो प्रश्न है कि अगर फ्लू हो और कोविड हो साथ में, सीजनल एलर्जी के साथ कोविड की प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर हो सकती है, या अगर मेरे को एलर्जीज होती है तो मेरे को कोविड जल्दी हो जाएगा. इसका शायद उनका ये कहना है कि इसकी अभी साइंस और रिसर्च इस पे अभी शोध नहीं हुआ है. बेस्ट यही है कि अगर आपको जो सिम्टम्स लगे अपने को टेस्ट करवाइए फॉर कोविड, राइट? Thank you so much, Dr. Preeti. We have, Dr. Sharon is in and out. Adya Singh,
would you have a question, please, with our eminent panel? A short, focused question that we can quickly get a back and forth with, please. Please, Adya. Great. So a question to the doctors. This is from a lot of people who are working with mothers right now. तो अगर बच्चों को कोविड हो जाता है तो बच्चे अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते हैं, तो ये केयर गिवर्स की तरफ से है, जो केयर गिवर्स उनका ध्यान रख रहे हैं वो क्या सावधानी बरतें? What are the precautions that caregivers can take while looking after children who have COVID in terms of feeding them, bathing them, and looking after them? Thank you so much. Thank you. Dr. Rachna, Dr. Preeti. Sure. So first thing that we've known is that जब बच्चों को कोविड होता है तो वो छोटे बच्चों को तब वो पेरेंट्स को कम ट्रांसमिट करते हैं, मगर फिर भी पेरेंट्स को सावधानी लेने की ज़रूरत है, यानी कि मास्क और बच्चों का देखभाल करने के बाद हाथ धोना, और सिर्फ एक पेरेंट अगर हो सके तो सिर्फ एक माँ या बाप उसका ख्याल रखे, उससे कम फैलाएगी. I don't know if anyone has anything else to add, but that's, I think, the most important thing. Sure. Dr. Preeti, you would perhaps we would love to have your thoughts also. बिल्कुल सही बात है कि देखभाल के लिए parents when they can should wear a mask. ये भी कि हाथ धोना is very important, not just for COVID but for all viruses, flu or any other virus that might be happening, for all prevention, not just for COVID. Thank you so much, Dr. Preeti. Now, would we have some other questions? Kalpana, you're on mute, please. We can ask Renu ji, and Renu ji ने join किया. रेनू ठाकुर ये वहाँ के जैसे बात कर रहे थे, वहाँ की जो ट्राइबल लोग हैं उनके संग, बच्चों के संग और वहाँ की महिलाओं के संग जो गांव में काम करती हैं. आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे रेनू जी जल्दी से? Yes, definitely. One question, like there is a lactating mother and she has become positive. Now, what are the precautions she should take and what impact could be on the infant? Voice is not clear. आपकी साउंड बहुत उसमें आ रही है रेनू जी. Okay. Maybe lactating mother. This question is for the lactating mothers, like she is infected. And what impact it will go on the infant? This is one of the questions from the rural places, You could hear me? Could you hear me? Yes. Yeah, sure, we could. I think we could, right, doctors? Yes. Yeah. So who would want to take it one at a time, please? Yeah, so this is a great question and one that I frequently deal with as in addition to doing infectious disease, I take care of newborns that are born in our hospital. So oftentimes when mothers are positive with COVID-19, we have the discussion of, do you want to isolate yourself from the baby and prevent infection that way, or do you want to stay with the baby and take certain precautions? So the precautions I recommend is to, first of all, there's great benefit in breastfeeding while you are infected, recovering, or if you have been vaccinated. Like Dr. Rachna mentioned, that those antibodies, which are basically immune substances that provide protection to your baby, are transmitted through breast milk. So Dr. Sharon, if I may, take them a bite-sized. Dr. Sharon actually इनका main focus, इनका main काम ही वही है, ये young mothers के साथ काम करती हैं जिनके अभी breastfeeding जो बच्चों को कर रही हैं, right? Now, and in terms of, if I understand, Dr. Sharon, you were saying that the mother should get a vaccine. Is that what you were highlighting, or rather you were saying the breast milk is the best for the child? Yes. The mother should breastfeed. Yeah, because whether you are ill with COVID or vaccinated, that those protective antibodies will be transmitted through the breast milk. So I do recommend breastfeeding, whether. So Dr. Sharon का strong recommendation है कि breastfeeding होनी चाहिए बच्चे के लिए. Dr. Rachna, would you like to add something
help us answer that, or Dr. Preeti? So just in addition to So that, I was just going to say, मैं बस इतना कहने वाली थी कि अगर आपको बहुत डर है कि कोविड है और बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं आप, तो मास्क पहन सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान. Great suggestion. yeah, sorry. Yeah, Dr. Sharon, yes, The please. only Yeah. thing is that if you are going to breastfeed, it's very important to take some protective measures. So it's very important that before caring for the baby, every time before caring for the baby, mom has to wash her hands, wear a mask, and only then can she put the baby to the breast and breastfeed. 2 हफ्ते के लिए. 2 हफ्ते के लिए पॉजिटिव होने के बाद 2 हफ्ते के लिए 14 days. उसके बाद आप मास्क और धोना निकाल सकते हैं. Okay. Great. Thank you. There's another question very similar to this. That the woman is pregnant and she's become positive. Now, will this Renuji's sound is not coming through properly. Adya, would you know the question she's asking to Adya, because she works closely with her? Adya, can you please quickly in English pass it on to our doctors, and then we get the answers and move it back? I don't know what question she was asking right now, but I'll just check with her and find out. Okay, fair enough, because the audio is not coming very clear. Meanwhile, looking at several of these questions coming in, and may I again request our panelists to please keep yourself on mute. I know we have to keep on muting and unmuting ourselves because there's some sound echo at times, and sound quality, hopefully हमारे listeners को ठीक sound मिले तो अच्छा रहेगा, there are a lot of questions on mental health which we have already covered. Krishna Tiwari is saying, क्या कह रहे हैं Krishna Tiwari? If anybody is suffering from bronchitis, then are they more at risk? Quick, this is for adults, I would assume, or maybe even children may have bronchitis. If somebody is suffering from bronchitis, क्या उनको ज़्यादा risk है COVID का? Are they more at risk for COVID? हाँ, Adya, can you hear me? पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, वही है ना, connectivity का issue हो रहा है. Yeah, Renuji, unfortunately we cannot hear you. We are trying to, but meanwhile, yeah, let's look at the question which we. ज़्यादा रिस्क नहीं है जो ब्रोंकाइटिस जो है कोविड डेवलप करने के लिए, लेकिन I would say the most important thing is monitoring symptoms, या बुखार या जुकाम या fever or oxygen levels, or if testing is available, then to get tested. Thank you so much, Dr. Carrie. Testing is the only thing, but there's an interesting question for you, doctors, coming from Shanku Shahi. Shanku is asking, ma'am, how do you protect yourselves, doctors? Shanku जी का प्रश्न है कि डॉक्टर्स खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? Thank you for thinking of us. Vaccination. हाँ, vaccination. और पेशेंट्स के साथ, कोई भी पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने के दौरान हम अपना प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं, जैसे कि यानी कि मास्क, और हम सबको पूछते हैं कि आपका वैक्सीन हुआ है या नहीं. दैट्स वन वे. अमेरिका में ये सब सुविधाएं हैं, सो हम बहुत लकी हैं यहाँ पे. मगर जब हमको पता नहीं होता है तब हम अपने आप को प्रोटेक्टिव गियर में कवर करते हैं और हाथ धोते हैं, मास्क पहनते हैं, सेम चीजें जो आप लोगों को कहने की हम करने को कह रहे हैं, same things. Yeah, and going back to the point of is it okay for lactating women to get vaccinated? I have a 5-month-old and I'm breastfeeding, and I got the vaccine and I feel great about the protection my son is getting. So again, for pregnant and lactating women, get vaccinated. Thank you so much, Dr. Sharon, Dr. Rachna, Dr. Preeti. बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन को लेने के लिए. कल्पना जी, would we have another question from the bank, or we have, there's so many questions coming in the chat box here. I'm trying to. Thank you so much. Shashi is saying, Shanku is saying, who had asked you this question on how doctors protect themselves.
Kalpana ji, would you have a question from the bank, please? There is a question. There's a question from Vinay Singh Viadia. Is in the COVID vaccine, what type of medicines are used, and how it affects on the human body? This is, I think, it's from class 11. Yeah, great question, and what a smart question. So this vaccine is actually very simple in the things that. Sharon, could you come a bit closer, please, doctor? Your sound is a bit far for us. Sure. So that's a great question, a very smart one. And, you know, as parents and as, you know, older kids, we look at the back of food that we eat to look at what's in the food and nutritional facts. So how much more should we want to know what's in a vaccine? You can translate. I actually, I got Dr. Sharon carrying the question कल्पना जी ने पूछा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही brilliant question है, वो student को congratulate कर रही है पूछने को, but उन्होंने जो कहा, कल्पना जी, can you translate, because I kind of lost what Dr. Sharon said. Kalpana, you're on mute, please. Yeah, Dr. Sharon, can you please just repeat it again? Just a sec, then I'll translate it. Okay, well, I will answer the question. So there are about, I think, 4 components in the vaccine. The first is the mRNA component of the vaccine, which is the material that our immune system reacts to. वो ये कह रही है उसमें 4 तरह की चीजें होती हैं. एक इस कंपोनेंट्स में 4 तरह की चीजें होती हैं, और पहली जो वो बताती हैं उसमें उन्होंने कुछ एक नाम दिया है जो I also couldn't understand. So it is made up of 4 components. That is what you're trying to say, na? Yes. So there's the mRNA. Then there are salts in the vaccine that help maintain the acidity after entry into our body. वैक्सीन में mRNA होता है एक, दूसरा salts होते हैं. Salt होता है जिससे acidity कम होती है. Yeah, and then there's something called sucrose, which is a sugar that basically helps maintain the structure of the mRNA while it's being frozen. फिर sucrose होता है जो जैसे ग्लूकोज कहते हैं, जो शुगर होता है वो भी होता है ताकि वो केमिकल की बाइंडिंग में सारा रखे mRNA को. Yes, yeah. For the 4th component. Then there's something called lipids, which are just fats. They're derived from animal and plant sources, and they keep the molecule kind of greasy or slimy to enter our cells in easier. और चौथा कंपोनेंट होता है लिपिड, जो लिपिड फैट होती है, जो कि उस पूरे मॉलिक्यूल और वैक्सीन को थोड़ा वो स्मूथ रखता है ताकि वो बॉडी के अंदर जा सके. थैंक यू सो मच. Kalpana, you want to ask something, but this was a technical question, but we covered it. We got it through. Thanks. Okay. There are no preservatives in the vaccine. Sorry? There are no preservatives in the vaccine. So if there's any, there are no preservatives in the vaccine. Great. Thanks. कोई preservatives नहीं होते. Now may I come back? I think Adya, you have the question which Renu ji was asking. Renu ji कुछ जो प्रश्न पूछ रही थी, रेणु ठाकुर, उनका sound unfortunately audio remote areas में अच्छा नहीं जा रहा था, but to Adya Singh के पास वो प्रश्न है. तो Adya, can you please ask that question in English so that Dr. Punesh can quickly get it? Yeah. So great. So Renu ji does a lot of work with children and mothers, and a question she's often asked is, if a woman is pregnant right now and becomes positive, is there going to be anything that passes on to the fetus? She has a 2-part question. That's the first part. And the second is, the local line of defense is local clinics. To prepare themselves for children getting COVID, what kind of medicines or other equipment should local clinics equip themselves with to prepare for the 3rd wave? So it's a 2-part question. Pregnant mothers and clinics, resources at local clinics. And before they go on, may I please request Adya, the answers that the doctors give, you will be able to translate them into Hindi and convey to the audiences. ठीक है ना Adya जी, आप ये कर दीजिए, जो answers आएंगे. Yes, please. Sure, I'll do that. So we addressed the 3rd wave earlier in the panel, but the protection really is the same. That बाहर जाना कम करें, और अपने आप को प्रोटेक्टिव गियर में अगर बाहर जाना हो तो मास्क पहनिए, हाथ धोना. Those are the things to protect from the 3rd wave until you get the vaccination.
So that's for I'll that just translate. question. I'll translate that bit first. Thank you, Dr. Rachna. रचना जी कह रही हैं कि अगर बच्चों के लिए कुछ तैयारी करनी है थर्ड वेव के लिए, तो बहुत सामान है, जैसे अडल्ट, जैसे बड़ों के लिए ध्यान रखना है, वैसे ही बच्चों को ध्यान रखना है कि बाहर ट्रांसमिशन का चांस कम है, और उसके अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिक दवाई या कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों के लिए ही यूज में आती है. तो वेरी सिमिलर टू जो ग्रोन अप्स के लिए रहेगा. You can continue now, Dr. Rachna. What was the first question was about the fetus. So Yes. you know, ये COVID pandemic बहुत नया है, सिर्फ 2.5 साल के लिए I think it's been around, not even. So अभी तक हमको पता नहीं है कि fetus को कुछ होता है या नहीं, मगर जितने सारे बच्चे अब तक पैदा हुए हैं positive moms को, वो उसमें कोई पैटर्न नहीं है कि कुछ बुरा कुछ डिफेक्ट या ऐसा कुछ हुआ है. There is no pattern. So as far as now, we don't have any data that shows that कोई बुरी चीज. Got it. Thanks so much, Dr. Rachna. Wanted to add one thing. Sorry. Yes, go ahead. Yeah, so I agree with Dr. Rachna that COVID is not what we say. Dr. Sharon, could you come a bit closer or a bit louder? Your audio Sure. is a bit, Yep. Thanks. Yeah, so COVID right now is not described to be a congenital infection, which means there are some cases that have been reported where there might be what we say in utero or mother to baby transmission while the baby is still in the mom, but it is not really, described to have that problem. So again, just be reassurance to that mother that your baby will most likely not be born with COVID. The other thing I just want to say is when infants do get COVID-19, they're more likely to have a severe disease. So it's important for local healthcare systems to educate parents about things like fever in an infant, fast breathing, and to know the warning signs of when to take them for medical attention. Got it. Adya, please share with our audiences. हाँ जी, क्या बोला इन्होंने? ये प्रश्न था कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो क्या उसके बच्चे को कुछ असर हो सकता है. तो दोनों डॉक्टर्स का यही मानना है कि अभी तक जितना भी अध्ययन पिछले 1-2 साल में हुआ है कोविड पर, तो माँ से बच्चे को कोई इफेक्ट होने का चांस बहुत कम है. तो माएँ संतुष्ट रह सकती हैं कि जब तक बच्चा पेट में है तब तक उनको कोविड होने का चांस बहुत कम है. परंतु इसका ध्यान देना चाहिए कि अगर एक बार डिलीवरी हो जाती है तो जो बच्चा बिल्कुल अभी पैदा हुआ है उसको बुखार होने के चांसेस हैं. तो आप प्लीज ध्यान रखें कि बच्चों में बुखार के लक्षण कैसे दिखते हैं उसकी जानकारी रखें, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे को होने का डर रह सकता है. उसके पहले अभी तक सारी अध्ययन यही बताते हैं कि माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन होने के चांसेस कम है. Thank you so much, doctors. I think that will be very helpful for expecting mothers. Yeah. The other question that was asked is also incredibly important. What can rural hospitals do to prepare for a possible third wave that could affect children? Right. So the answer to that is basically there needs to be more education in picking up children who are severely ill. So as I discussed, things like knowing how to count the breathing rate of children. The breathing rate of children differs between ages. To know, to be aware of this clinical entity called multi-system inflammatory syndrome in children, and to know that that happens several days to weeks after a COVID infection. And sometimes there may not even be a history of having COVID. That child may just be exposed to another individual with COVID. And there's one more thing I just want to point out is that oftentimes those children that do get very ill from a previous COVID infection don't have symptoms of COVID like the runny nose, cough. They can just have fever. And one of the predominant symptoms studies have found are gastrointestinal symptoms. So unlike the adult population where people who get sick have respiratory symptoms, the children who get very sick from this multi-system inflammatory syndrome can just have diarrhea, vomiting, belly pain. So it's really important for the rural healthcare system to know when to identify a child that needs to be referred to a tertiary center. Thank you so much, Dr. Sharon. आद्या जी, आप quickly इसको अगर हिंदी में इनका जो सार एसेंस जो उन्होंने बोला कन्वे करिए प्लीज.
श्योर हमारे रूरल पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पे क्या चीजें तैयार होनी चाहिए बच्चों के लिए। सबसे जरूरी यही चीज है कि जागरूकता होनी चाहिए कि बच्चों को कोविड एक अलग तरीके से होता है, जहाँ बड़ों को ज्यादातर सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चों को क्या होता है कि उनको दस्त हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट का दर्द हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को लक्षण कैसे अलग रहेंगे बड़ों के तुलना में। और दूसरी बात, छोटी चीजें जैसे बच्चों का सांस लेने का रेट मापना, ये भी बदलता है हर एज के हिसाब से, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो आशा वर्कर्स हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं, उनको ये जानकारी जानी बहुत जरूरी है। Thank you so much, Adya. Before we move on, a quick question from Raj Dwivedi. He has also helped us put this whole event together. Raj is asking, me and wife were infected in November 20. Is there still a possibility of a clot formation? राज जी का प्रश्न है कि मेरे को और मेरी पत्नी को हमें कोविड हुआ था नवंबर पिछले साल, क्या अभी शंका है, चांस है कि मेरे को ब्लड क्लॉट हो सकता है? Who could quickly answer with something? Dr. Preeti? Chance is very low है क्योंकि in the data that we know, clots usually form 6 हफ्ते infection के बाद, or यानी about 6 weeks between the infection and when clots start to form. So November में that's about 7-8 महीने पहले, so very Sure. low. Great. Thank you so much. A quick answer to you, Raj, your question. Dr. Preeti is saying कि chances should be very, very less because blood clot का जो chance होता है, वो होता है जब आपकी रिकवरी के 6 हफ्ते बाद या उसके कुछ समय तक। तो नवंबर में तो काफी 5-6 महीने हो गए हैं, तो होपफुली भगवान करे एंड आपका उसका चांस बहुत कम रहेगा। थैंक यू सो मच। कल्पना जी, वुड यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज? There is this. This is very interesting. Let me check this question which was there. Yeah, the thing is, we have so many questions. To quickly pick out which one, your mind gets distracted. We scatter. This person, Akanksha Pant and Vinod Joshi, though it's similar to what they were saying, the psychomotor skills of the children have just affected during the COVID pandemic. How guardians can facilitate the children so that they can restore normalcy both physically as well as mentally? This is a question from Akanksha Pant and Vinod Joshi. So, मेरे ख्याल से बच्चों के लिए नॉर्मसी बहुत ज़रूरी है और नॉर्मसी हम से ला सकते हैं, तो घर में एक रूटीन सा बना सकते हैं। पता है कि वो लोग स्कूल में नहीं जा रहे। Doctor, can you come a bit closer to the audio? The audio is a bit, far away. Yeah, or louder. I'm as close as I can be. Stay close. Is that better? हाँ जी. मगर Yeah, sure. Thanks. जैसे कि अब Okay, she has dropped out. But this is again, isn't it more along the lines of mental pressure and psychological aspects? So we've covered some of it. Kalpana, you're on the mute, please. Yeah, it's some bit similar to that. Meanwhile, we can take a question from Anubhav Tiwari from class 8th. There are many misconceptions about the vaccine. So how can we convince them to get vaccinated? When he talks of them, I think he's talking about his parents. Could be, yes. Great question, Anubhav, Krishna. Doctors, बताइए. I think the best way, okay, if I can answer this quickly and move on, I think the best way, Anubhav ji, is that अगर आपके parents का है तो उन्हें बोलना कि मेरी safety के लिए आपको vaccinate कराना जरूरी है, क्योंकि as the doctors have been telling us earlier, Dr. Sharon, Dr. Preeti, Dr. Rachna, that बच्चों में कोविड की चांसेस कम हो, उसकी सबसे बड़ी इंश्योरेंस ये है कि हमारे एडल्ट्स वैक्सीनेट हो। तो अनुभव जी, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए कि आप अपने लिए नहीं तो मेरे वेलफेयर के लिए तो कीजिए, गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, राइट? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। Sure, thank you. Kalpana ji, we can move on for some other questions. And Acha, by the way, we are running very good on time. We are almost 1 hour, 15 minutes. So we have around 15 minutes more, doctors, with your permissions. Would you be able to be with us another 15 minutes? Another 15 minutes? Thank you so much. Thank you so much. Sure, a pleasure. Could I ask a small question about vaccines? Just one last question there. Please.
अगर किसी को ऑलरेडी कोविड हो चुका है तो क्या वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है? आजकल न्यूज में आ रहा है यहाँ पे. Quickly I'll translate. If you've already had COVID, should you not be taking the vaccine? That's the advice a lot of people are getting now. जो डेटा जो है जरूरत है, लेकिन there can be a delay between the time of infection and when that person receives vaccine. Got it. Thank you. Yeah, I just want to add that after having we don't know for sure how long protection lasts after a natural infection. Right now, there's estimates saying that you have protection from a second, like a reinfection, for about 3 months. So after getting a natural infection, the protection may not be long term, and it's really important for people who have had an infection to be vaccinated. Should I translate that? Yeah, please translate that. Yeah. So अगर आपको कोविड हो चुका है तो अभी तक टेस्ट बता रहे हैं कि करीबन 3 महीने तक आपको अपनी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटेक्शन होगा, एंटीबॉडीज बन चुके होंगे, पर 3 महीने के बाद वैक्सीन लेना आपके लिए भी जरूरी हो जाएगी अगर आपको कोविड हुआ है तभी भी. तो ये बहुत जरूरी है याद रखना. Thanks a lot, doctors. Thank you so much. We have a question coming in from Jyoti Pandey. She's a student. She's saying of the 12th class. उनका प्रश्न है, मेरे ना नीचे पैर दोनों हो रहे हैं, खुजली भी होती है, तो प्लीज इसके सॉल्यूशन बता दो. I think what she's saying that she has itch in her toes or feet, etc. So if you have any suggestion on that, please. Or is it some of the symptoms of COVID? We don't know. मेरे ख्याल से कोविड का सिम्टम नहीं है, मगर we can put lotion. I don't know. हाँ जी, डॉक्टर रचना, what did you say? Please a bit louder. मेरे ख्याल से कोविड का सिम्टम नहीं है. इचिंग हो सकता है. अगर कोई लोशन या कुछ मॉइस्चराइजिंग हो सके तो कर सकते हैं. Great. Thank you so अगर आप much. बाहर नहीं जा सकते तो तेल मालिश कर सकते हैं. Great. Thank you so much. Jyoti ji, I hope you got your answer to the question. May I now invite if maybe Lalit Pant ji, आपके पास कोई और प्रश्न है? बहुत आए थे. If कोई एक specific सा question और targeted, we can take that. अगर कोई प्रश्न है जो कि हो आपके पास, जो हम डॉक्टर से पूछ लें, प्लीज. अपने को अनम्यूट कीजिए ललित जी, प्लीज. अगर कोई प्रश्न हो आपके पास. बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो अभी मिले हैं हमें, और निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने पूछे हैं उनका यदि लिखित में कुछ उत्तर आपकी ओर से मिल सके तो हम आपके आभारी रहेंगे. अभी एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, क्या भविष्य में भी हमें इस तरीके के सलाह टेलीमेडिसिन के रूप में मिल पाएगी, ताकि हम पर्सनली व्यक्ति लोगों को इस सुविधा का फायदा दे सके, क्योंकि तकनीकी रूप से हम लोग इतने दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं कि हमें सिग्नल की प्रॉब्लम और बहुत सारी वॉइस प्रॉब्लम और लैंग्वेज प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें रहती हैं. तो क्या पर्सनली भविष्य में आप लोगों का समय मिल पाएगा? ये एक महत्वपूर्ण विषय है. Thank you so much. Mr. Lalit's question or comment is that one, there have been so many questions coming and missing. Can they get written answers to some of these questions? I think probably we've sent you the question bank. If you could, we can see. हम प्रयास कर सकते हैं ललित जी. डॉक्टर्स हमें इतना टाइम देते हैं, लोगों का टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो भाग रहे होते हैं इधर उधर हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को. बट हम प्रयास रिक्वेस्ट करेंगे इनसे कि उनका लिखित में जवाब, यस, कुछ कॉमन जवाब डेफिनेटली ले आएंगे. Second, Mr. Pant is saying that, once again, he's harking back to the aspect of that, in the future, can we look forward to your cooperation or support for some telemedicine or some such these things? निश्चित रूप से जो डॉक्टर हैं धरती के भगवान हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, और आज के समय में कोरोना के इस दौर में आप सभी लोगों की वजह से हम लोग विजयी हुए हैं, और भविष्य में भी आपका सहयोग हम चाहेंगे कि इसी रूप से मिलता रहे. ये आप लोगों का जो भी व्यस्ततम समय है उसमें से कुछ समय हमें मिल पाए, तो आज का बैठक की उपलब्धि हम मानेंगे. He's saying that doctors are no doubt, gods on earth or divine people on earth. So we are really, really thankful.
and we really look forward. And this session of today, which is still continuing, and we have some more time, a few more minutes, has been extremely beneficial for us. बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी. अभी अपन आगे चलते हैं. डॉक्टर अशोक पंत, आपके पास कोई प्रश्न है, कोई स्पेसिफिक टारगेटेड क्वेश्चन? जो इतने क्वेश्चंस आए. Thanks a lot. There is a general confusion among the people कि in COVID-1 there was the different kind of issues for the remedial measures, but in COVID-2 the oxygen problem, the oxygen level issue was very much highlighted. It was not in COVID-1 phase. In COVID-2 there was chaos regarding oxygen cylinder. So people could not understand what was the basic difference, why oxygen issue was not in COVID-1 and why it was it created too havoc in COVID-2. So what was the oxygen issue in these two phases? I also couldn't understand that. So, yeah. Sure, Dr. Please, Hanji. Yeah, I think that's a great question, and I don't think it has to do with the a different variant. You know, we had one variant in the first wave, and now we're seeing some other dominant variants in the second wave, like the Delta variant. I think it has more to do with the hospital preparedness. So initially, India's first wave was very minimum because there was a very strict lockdown right away. And so more, the hospitals were not inundated. And so those people who had oxygen issues were treated, quickly and effectively. But with the second wave, there was such an overwhelming of the healthcare system in India that the oxygen, the deficient supply in oxygen was more highlighted. But I don't believe it has to do with the actual virus itself, where, the virus in the second wave caused people to require oxygen necessarily, if that makes sense. Now, we do know that with the Delta Sure, strain, Dr. Sharon, maybe slice and, it helps going in, portions. Yeah. तो डॉक्टर शरण का ये कहना है कि जो सवाल था डॉक्टर अशोक पंत का कि ऐसी बात नहीं है कि इस बार ऑक्सीजन ज्यादा क्यों, मतलब त्राही मच गई, फर्स्ट वेव में नहीं थी. वो इसलिए था कि फर्स्ट वेव में नंबर्स कम थे और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेटर थोड़ा हैंडल कर गया, और जो सेकेंड वेव आई इसमें नंबर्स इतने बढ़ गए कि ऑक्सीजन की मारामारी बढ़ गई और सबको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ गई. Yes, doctor, please continue. Yeah, now the Delta strain, which has become one of the dominant strains in India, we know can cause more. It's definitely more transmissible, and it may even be more. It may even cause severe disease. The jury is still out on that, but that might again possibly be contributing to the second wave and the need for so many people needing oxygen as a result of a more severe disease. But we don't know for sure yet. Thank you so much, Dr. Sharon. Dr. Sharon को ये कह रहे हैं कि हमें पक्का नहीं पता क्या कारण है, बट मोस्टली हम ये मान रहे हैं, दिख रहा है कि सेकेंड वेव में केसेस ज्यादा हुए, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई. कल्पना, would you have some questions? एक बात जो उन्होंने बोली वो आप देख, उसने कहा कि पहले जब वेव थी तो हमने बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, इसलिए हमारा पहला वेव इतना खतरनाक नहीं था. बट सेकेंड वेव में हम थोड़ा सा ज्यादा, उन्होंने कहा कि उतना हमने नहीं किया, तो द रिजल्ट कुड बी वो ज्यादा हो गया. I think that is what she was trying to do. No? Dr. Sharon? Yeah, I don't know if Dr. Preeti has anything else to add, but sorry, my connection cut out. I might have missed the question. कोई नहीं, आप भी पहाड़ों में हैं, हम भी पहाड़ों में हैं, we are सब remote connections में हैं. Sure, Hanji. I think that answers the question. We'll go further. Yeah, do we have any other questions in the bank? I think we've actually covered many of the questions. काफी कुछ हम covered. There are two questions. If you, what are the Anushka Verma has asked me. She's asked a question. What are the disadvantage of vaccines? Anushka Sharma is asking, and then there's one more. Yes, this is this. In the COVID vaccine, how does the COVID vaccine affects the human body? I think a similar question you've already been answered. But Anushka Sharma is asking, what are the disadvantage of vaccines? Is there any disadvantage of a vaccine?
There are no disadvantages to the vaccine. None. Only Zero. advantages. Great. क्लियर कट आंसर है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है वैक्सीन का, ओनली एडवांटेजेस है, ओनली एडवांटेजेस. So I will say कि कोई भी दवाई लेने से हर एक इंसान को सेम रिएक्शन नहीं होगा. तो हो सकता है कि वैक्सीन के साथ 2-3 दिन कुछ अच्छा ना लगे या आपको बुखार हो या ऐसी कुछ चीजें वेरी पॉसिबल वैक्सीन के साथ. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लेना नहीं चाहिए. वैक्सीन से जान बचती है. थैंक यू सो मच. तो अनुष्का जी, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया आपको कन्विंसिंगली फ्रॉम एक्सपर्ट्स. या कल्पना, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? और वी हैव स्टिल, एंड बहुत सारे फेसबुक लाइव में आ रहे हैं. प्लीज कीप योर क्वेश्चंस कमिंग. बट आई थिंक अब हम आखिरी दौर 5 मिनट के लिए पहुंच गए हैं. लास्ट 5 मिनट्स और so we will try and take some other questions. There are too many questions out there. Kalpana, would you have some other questions, or should we There look is in a question, but I don't know because last time it was answered. What are the symptoms of black fungus and what are its precautions? Vivek Bhatt Sure. is asking from class 12. Yes. Black fungus के क्या symptoms हैं? विवेक भट्ट पूछ रहे हैं. Yes, doctors, please. Precautions क्या हैं? Precautions, sorry. Precautions. Okay, precautions. Yeah. ब्लैक फंगस जो है ये सब जगह में होता है. धरती में है, it's in the air, it's in the पानी नीचे है, so it's everywhere. And to prevent it, there's, I'd say, 3 things to remember. One is if steam inhalation में बारे में, if there's any route or way that somebody is going to use water, then that container that the water is in must be saaf suthra, must be clean. Number 1. Number 2, for individuals who have sugar ka problem या diabetes, वो इंसान के लिए controlling the sugar is very important. These are the 2 main points for black fungus or black fungus ka prevention. Thank you. Quickly translating and then we take inputs from others. Dr. Preeti का कहना है कि black fungus, अव्वल तो black fungus एक natural चीज है और हर जगह होती है, हमारे आसपास कहीं भी है सारी. ये तो नेचर के इकोसिस्टम की एक हमारी जीव जंतुओं, हमें इनके साथ रहना है. बट यस, अगर ब्लैक फंगस से प्रिकॉशन लेनी है, एक तो जो वाटर कंटेनर है जो भी हो वो एकदम क्लीन हो, और दूसरा जिनको डायबिटीज हो अगर, वो अपने शुगर को टोटली कंट्रोल करने का प्रयास रखें. वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, डॉक्टर रचना शेठ, प्लीज? Can you hear? और लास्ट चीज है, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं अगर ये एक्चुअली हो रहा है, मगर मैंने सुना है कि बिन सोचे स्टेरॉइड्स दे रहे हैं डॉक्टर्स, और नॉट डॉक्टर्स मगर पेशेंट्स खुद स्टेरॉइड्स ले रहे हैं प्रिवेंशन के लिए, और ये नहीं करना चाहिए. स्टेरॉइड्स बिन सोचे समझे लेने से ब्लैक फंगस का रिस्क ज्यादा होता है. ग्रेट. डॉक्टर रचना जी का कहना है कि हमने सुना है कि कई पेशेंट्स काफी अपने ही प्रयास में खुद ही स्टेरॉइड्स लेते हैं. स्टेरॉइड्स खुद बिल्कुल नहीं लेने चाहिए. डॉक्टर शारन, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? I just want to reassure parents that black fungus or mucormycosis is not as prevalent in children as it is in adults. I've taken care of just one in my short career, and that was a child who was on chemotherapy. So this is not a problem that we should anticipate to see in children. Yeah. थैंक यू सो मच. डॉक्टर शारद का कहना है कि ब्लैक फंगस की जहां तक बात है, जो केसेस जो अमेरिका में देखे गए हैं उसमें ब्लैक फंगस बच्चों में केसेस नहीं आए हैं और बहुत ही या निग्लेजिबल आए हैं, तो हमें बच्चों में ब्लैक फंगस की अभी चिंता फिलहाल के लिए नहीं करनी चाहिए. Now I think we are almost closing. Kalpana ji, would you have any last pop-up question? You can dip into your hat, pull a rabbit out of your hat, or give us a question. Kalpana ji, I would like you will give 1 minute to me for last. 30 seconds, sir. 30 seconds. Yeah, just it's a courtesy that on behalf of the people of Pithoragarh, students, children, parents, all the people of Pithoragarh, I would express my heartfelt thanks to Image India Institute, Sachdeva ji, Kalpana ji, and all our doctors, Preeti ji, Rachna ji, Sharon, and all the people associated with this program.
It was a wonderful session. I once again thanks on behalf of Pithoragarh to all of you. That's all. वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। अभी तो मैं आपसे कमेंट मांग रहा था, थैंक यू तो हम आपको डेफिनेटली, आप और ललित जी को, जो भी हमारे लोकल होस्ट आपको कर रहा, आपने वो पहले ही मौका ले लिया, सो यू आर वेलकम ऑन दैट नोट ऑफ थैंक्स। कल्पना, एनीथिंग एल्स? अदरवाइज आई विल इनवाइट ललित जी अपने नोट ऑफ थैंक्स के I लिए। think because there are questions but more or less similar, and there is this question, I don't think, because this is relating to a DGHS circular in India, which I don't know whether these doctors will be aware about it. Says, should I read the question? No, I think that's another one. Let's pick a That is techie another question for the answer. nerds. I think One we are last done now. nerdy question. A nerdy question coming from Adya or from comments. It's saying there was a Dr. Luc, I don't know, Luc Montagnier, a famous French virologist and Nobel laureate, who said because of vaccinations there will be more mutants of virus and everybody getting vaccinated will die within 2 years. Please clarify. Do you want to address or debunk this? Debunk this. Yes, I'd love to. Yes. You would love to debunk it? Yes, I would love to. So I do get this question frequently, and this is a belief system that is held even among some, even in the scientific community. And so, yes, that does make yes. So that's a logical expectation. But I'll stop and get translated. Thank you, Dr. Sharon. Please, keep yourself on mute while others are speaking. Other than the speaker, others can keep on mute. अर्ज है हमारा, साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतर रहती है हमारे दर्शकों के लिए. So thank you so much. So Dr. Sharon is saying ये जो अफवाह है, ये जो कहते हैं कि वैक्सीन से म्यूटेशन होती जाएगी और हम सब 2 साल के अंदर जिनको वैक्सीन होगी हम सबका आर पार हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है और इस पे कोई बिल्कुल वजूद नहीं देना चाहिए. So Adya, whoever asks you this question, please go back and give them a stern talking down. Okay, thank you. Oh no, okay, yeah. I just wanted to say more. So we know that what really drives variant formations, for the formation of variants, is actually increased transmission. So when we vaccinate a large portion of the community, we decrease transmission of the virus from one person to another, and that is what decreases the formation of variants. So this is why vaccination is the only way out of this pandemic. Yes, is there a theoretical risk that as we vaccinate against the dominant strains, there may be emergence of other different types of strains? But really, when we decrease the level of community transmission, we decrease the likelihood of other variants being formed. So that's one thing. The second thing, even if there were other variants that do develop because of widespread vaccination, we are finding that the vaccines we have now are so effective against the variants that are developing. So again, that theory doesn't hold because of two factors. Sure. Thank you so much, Dr. Sharon. I think, Adya, can you quickly within 15 seconds translate and share with your viewers, our viewers, आपका क्वेश्चन जो था जिसका जवाब शारन ने दिया अभी? तो डॉक्टर शारन यह कह रही हैं कि वैक्सीन का यही काम करने की प्रक्रिया होती है कि उसकी वजह से हम एक दूसरे को इन्फेक्ट करना कम कर देते हैं, और जब हम एक दूसरे को इन्फेक्ट करना कम कर देते हैं तब वैक्सीन आगे बढ़ती नहीं है. हाँ, ये एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि अगर वैक्सीन ने एक स्ट्रेन को खत्म कर दिया तो एक दूसरी स्ट्रेन बन सकती है, लेकिन जो हमें लाभ मिलता है इससे कि हमने कम्युनिटी ट्रांसमिशन को स्टॉप कर दिया, वो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण है. और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो कोविड की वैक्सीन है ये बहुत इफेक्टिव है, तो इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. वैक्सीन लेना ही सबसे जरूरी चीज है अपने को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए. That's about it. Thank you so much. Kalpa ji, before, just a second. Before we end, there is a quick question, Robin, because they've asked, they said कि a lot of, bodies, because they could not be cremated or could not be burned, they have been thrown in the rivers. Will it affect the water? There's a question 2-3 people have been asking me, so there's a quick question. The question is, some COVID-affected dead bodies were immersed in the river or let flow in the river. So would that contaminate the waters and would that have caused transmission of COVID?
See, we don't believe that the COVID is still living and then able to be transmitted. पानी की वजह से. No. Yeah, I know that in India there's a kind of ban against burial or cremation processes when a patient is diagnosed with COVID. But unlike other infectious diseases, like for example Ebola, COVID-19 is not spread by corpses or dead bodies. So first of all, I think hygienic and up to par with like other regular standards of the burial or cremation process is important, and it brings great closure to those people who have lost loved ones. So I'm not quite sure why there's a ban on that. And secondly, I think as Dr. Preeti said, waterborne illnesses that definitely could arise just from a dead corpse being thrown into a river or water. Nothing specific to COVID, basically. Thank you. Before we move on, because there was a question earlier to which somebody answered, and Dr. Samar Mehta from US is answering Himani ji's question. He's saying, "I'm Dr. Samar Mehta." In fact, Dr. Samar Mehta to is program ke co-organizer hai. He is the co-organizer and co-creator of this program. So he read Himani ji ka उन्होंने comment पढ़ा तो कह रहे मैं डॉक्टर मेहता हूँ अमेरिका से, इन्फेक्शियस डिजीज का मैं स्पेशलिस्ट हूँ जिसने ये कॉल ऑर्गेनाइज हेल्प करी डेफिनेटली। वो ये कह रहे हैं शायद आपके प्रश्न का आंसर ये पैनल अभी प्लीज कैन वी कीप ourselves on mute if we are one sec. So डॉक्टर मेहता का आंसर हिमानी जी आपके लिए, मैं कह सकता हूं कि पेन सेफ है और इस सिचुएशन में कोरोना का रिस्क नहीं है। I think that was the question Himani asked about some pain somewhere on her feet or something, right? Thank you so much, Dr. Samar, for pitching in from anywhere. Kalpana ji, anything else, or we are good to go with the closing thanks and stuff? है ना? Awesome. Thank you. May I invite बहुत अब मैं ऐसा होगा, I'll invite Lalit ji for his thanks to our eminent panel, and then we'll invite half a minute each from each of our esteemed panelists for whatever they may want to share, and then we'll be closing it. तो मैं ललित जी को इनवाइट करता हूँ 15 सेकंड में अपना भी कुछ कहना चाहे, वैसे वो कह ही चुके हैं, but anything else you would like want to say before हम इस प्रोग्राम को समाप्त करने के? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इतने दूर रह के भी अपने देश की चिंता की है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर सुपन सर का जिन्होंने हमें यहाँ कोऑर्डिनेट किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सारे CSOs का, सभी विद्यालयों का, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, राजकीय स्कूलों का यहाँ के, जिनके बच्चों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। और मैं विशेष रूप से आप लोग सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपदा में भी अवसर है, और ये अवसर हमें मिला है, आप लोगों ने दिया है हमें कि हम हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर जो हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं, और निश्चित रूप से भविष्य में हम और आप लोगों का सहयोग लेंगे। मैं इस शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू। Thank you. Lalit Panji is thanking, of course, our eminent panel, and he is also thanking the various civil society organizations who joined in to make this program a success, who joined in from various places, the school students and all. We have lots of school students here in this now, plugging in for this. Lots of teachers, principals, social workers, health workers and all. So Lalit Panji is thanking. बहुत बहुत शुक्रिया पंजी आपका, ऑफ कोर्स हमारी तरफ से भी, हम सब की तरफ से भी। Now may I invite let's say Dr. Rachna for any concluding thoughts, one takeaway, giveaway you want to leave the audiences with. मैं डॉक्टर रचना जी को इनवाइट करता हूँ, कुछ भी वो कहना चाहें, धन्यवाद कहना चाहें, that's good enough, और कोई भी एक सिंगल मैसेज जो वो छोड़ के जाना चाहें। Okay, so मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को एक घर में रूटीन सा दें, घर में एक्सरसाइज दें, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत स्ट्रेस्ड है, मगर बच्चों के लिए बहुत ही अहम बात है कि हम सब उसको डेढ़ प्यार दें। तो आप बहुत प्यार कीजिए अपने बच्चों को, इससे ज्यादा अच्छी कोई दवाई नहीं है, और अगर कोई दवाई है तो वो है वैक्सीनेशन। तो जब वैक्सीनेशन मिले तब वैक्सीनेशन ले लेना, सोचे बगैर ले लेना। Beautifully said. Thank you so much, Dr. Rachna.
कोई शब्दों की जरूरत नहीं, डॉक्टर रचना ने आपसे खुद ही हमारे दर्शकों के साथ अपना शेयर किया. May I now invite Dr. Preeti Mehrotra for any concluding thoughts, any giveaway, giveaways. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए. और ये तीन चीज़ों इम्पोर्टेंट रिमेम्बर करनी चाहिए: वैक्सीनेशन, मास्किंग और हाथ धोना. बस, धन्यवाद. Beautiful summarize. We hope, क्योंकि we large number of audiences, और इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि कुछ कॉमन बेसिक चीजें जो हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं, आपस में कन्वे करने का, उसमें उस झिझक को हटाने का ऑल्सो कुछ मकसद है इस प्रोग्राम का. नाउ मैं इनवाइट डॉक्टर Sharon Rupula for her closing thoughts, comments, any leave-aways, takeaways, please. You're on mute, Sharon. Doctor. Yes, thank you for allowing me to contribute in this discussion. I really enjoyed getting questions from children. I hope that that's a dialogue that we will continue. And thank you again for all the healthcare workers in India that have faced this brutal pandemic thus far very sacrificially. Thank you. थैंक यू. डॉक्टर शारन का कहना है कि वो ऑफ कोर्स धन्यवाद करती हैं, और खासकर उन्हें बहुत अच्छा लगा जो बच्चों के इतने प्रश्न आए जिसको वो आंसर कर सकी, वो और उनके कोलीग्स जो आंसर कर सके, ताकि बच्चों को डायरेक्ट अगर इंफॉर्मेशन जाए, उनके पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स को भी तो पता चले कि उनके बच्चे क्या सोचते हैं. आधी प्रॉब्लम तो दुनिया में होती है, पेरेंट्स को पता नहीं होता बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे को नहीं पता पेरेंट्स क्या सोचते हैं, राइट. सो उसका भी कुछ यहाँ हम गैप ब्रिज कर सके. सो थैंक यू so much, Dr. Sharon. Now may I invite my colleague Kalpana to say a vote of thanks to our support partners. Kalpana, इतने लोगों ने हमें इस प्रोग्राम को assimilate करने में करा, और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने इतनी लीडरशिप से, I mean, कल्पना, ये सारा यहाँ कल्पना मैम के बिना नहीं हो सकता था. तो she just took it like a mission. तो बोली कि मैं पहाड़ की बेटी हूँ तो मैं पहाड़ों के लिए कुछ करूंगी. तो हमने बोला ठीक है, हम भी पहाड़ से हैं. सो कल्पना, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल आवर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको भी आप नेम करना चाहें. और हमने सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगोस दिए, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमें मेंशन भी बहुत लोगों ने काम किया. एनीवे, कल्पना जी, योर्स प्लीज. स्पेशल थैंक्स गौरव. स्पेशल थैंक्स फॉर गौरव. बिल्कुल. First, thank you all the three doctors, and thank you all those who are on the panel. But yes, a special thanks first एक डॉक्टर गौरव को, नहीं, मिस्टर गौरव रोडियाल, जो एक इनका जो फेसबुक चलता है क्या, सिटी पिथौरागढ़, जो वहाँ के यूथ के लिए सोशियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है और काफी उनकी समस्याओं को देखते हैं. गौरव की आज तबीयत ठीक नहीं थी, वो ज्वाइन नहीं कर पाए, बट उन्होंने हमारी बहुत मदद की ये प्रोग्राम कराने. सो थैंक यू गौरव. एंड अ स्पेशल थैंक्स टू सुरेंद्र सिंह नगरकोटी जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की ये मैसेज सबको देने की कि ये अटेंड कीजिएगा. जलज मेहता, स्पेशल थैंक, who have been really helping us in coordinating, and he deals with medical tourism, so thank you Jalaj ji. Mr. B.S. Mankoti, who's been like kind of a partner with us in whatever we have been doing, so thank you Mr. Mankoti. और हरेला सोसाइटी के मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद. मिस्टर एलसी पांडे, जिन्होंने मुझे इतने लोगों से कनेक्ट करवाया, सो आई कुड टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. थैंक यू पांडे जी. और राज द्विवेदी जी, जिन्होंने अभी प्रश्न ही पूछे थे. थैंक यू एवरीबडी. एंड थैंक यू डॉक्टर अशोक पंत जी. एंड आद्या सिंह is the way she's been, the enthusiasm that you bring, Adya, in helping us out. So thank you, Adya. और एक बहुत बड़ा थैंक रेनू जी को, वो शायद उनका कुछ उसका प्रॉब्लम था, वो चली गई हैं. So thank you everybody, and thank you Robin for saying such nice words for me. But basically, it is your baby. I'm just nurturing it. We are nurturing each other's babies. That's the way the world should be. हमें हमारा coming back, you see the tagline of this program is zero to infinity, live and let live. Okay, तो हमें हर एक को जीना और जियो देना, और मैनकाइंड के साथ, मैनकाइंड और नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ, हम सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ चलना है. कल्पना जी has thanked many. We may have missed, हम कुछ मिस कर गए हों, कुछ नामों को मेंशन करना चाहे तो हमें माफ कीजिएगा. पर मिस्टर गोसाई, I was just remembering the district education officer, उन्होंने बीच में कमेंट भी करा था, काफी टीचर्स वगैरह को भी बहुत ज्यादा पूरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आउटरीच किया. एंड सेवरल मोर. आई विल बी so we big, हम माफी चाहते हैं जिनको मेंशन नहीं कर पाए. Once again, so now
Robin, can I please add? I just need to thank you and Kalpana. I mean, I've seen आप दोनों कितनी मेहनत कर रहे हो behind the scenes. You've done 6 traveling webinars so far. For each webinar, you take out the time for so many calls. You personally meet every one of the panelists. Thank you so much for putting in so much time and effort to make sure that this information reaches the most remote villages. Imagine we have people from Nepal as well who are joining in. So deep gratitude and thanks to both of you for doing this. No, so thank you so much. Again, I mean, of course, thank you so much. And also, you see, our doctor colleagues from the US, they're taking up. So the point is, when everybody starts pooling in, we all each get inspired with each other and each other's, हम सबको एक दूसरे से ऊर्जा मिलती है. So that said, we've had ये बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा प्रश्न आंसर रहा. डॉक्टर्स ने आपके आंसर्स लिए. ये जो वीडियो होगा इसकी रिकॉर्डिंग हम YouTube पे भी कल सुबह तक रख देंगे. जिनको चाहिए हम पास ऑन करेंगे वंस. और हम जल्द ही एक और टाउन हॉल लेके हाजिर होंगे अराउंड कोविड ओनली. हो सकता है अडल्ट कोविड. अब आज का सेशन तो बच्चों का कोविड का था. सो हम रियली होप करते हैं कि ये जो सारा प्रोग्राम रहा आज का आपको फायदा हुआ, कुछ कंसर्न्स थोड़े कंफर्ट मिले और कुछ क्लियर कट आंसर्स भी मिले. दैट सेड अब ये ब्रॉडकास्ट खत्म होती है. बहुत बहुत धन्यवाद.